Good evening, all of you. I hope audio and video both are working fine. Those who are online, please confirm. Audio and video both are working fine. Please share this session with your friends as well, those who are appearing this time prelims. Thank you, and bit late in the beginning of the session, so extremely sorry for that. Okay, so we'll try to cover economics concepts as much as we can, and it's a mix of static as well as current affairs, completely on the basis of the syllabus. तो आमे चेष्टा करिबा पूरा गोटे कंप्लीट ओवरव्यू नवा पाई. ओके, कंप्लीट गोटे ओवरव्यू नवा पाई चेष्टा करिबा. सो चलंतु स्टार्ट करिबा सेशन. ओके, तो जो माने ऑनलाइन अछंती सेशन को टिके शेयर करि नियंतु सो दैट वी कैन स्टार्ट. आउ टिके निजर फ्रेंड्स मानक सहित भी शेयर करि नियंतु. ठीक अछि. Okay. First of all, I would say with the extreme successful result of OPSC StudyIQ team and 20 million family members we have achieved with respect to StudyIQ IS channel. To see our StudyIQ is giving the lowest amount or lowest or highest discount, you can say, or lowest in terms of prices of different crash not crash course, foundation course. In fact, जिते हमरो फाउंडेशन कोर्स गुड़िक अच्छी से फाउंडेशन कोर्स रे हमरो लोएस्ट प्राइस अच्छी. जदि आपण देखिबे गोल्ड इट्स 8,999 and platinum with this 4 years validity, that is 15,999, is the lowest ever in the history of StudyIQ with respect to the foundation courses. If you want to opt, that is English and Hindi foundation course English, we have this Paripurna batch as well. Paripurna batch is about the English and Odia. Paripurna batch is about English and Odia. If you want to join that as well, okay. State PCS Odisha, and here is the Paripurna batch 7. So if you want to join that also you can do. ठीक अछि. तो okay, so या विषय आउट के डिटेल रे भी डिस्कस करिबा लेटर पार्ट रे. So let's start the session and please share the session with your friends as well. Chalo, the first question on your screen. If you miss this session, I would say at least you will lose around 15 to 20 marks in your exam. Okay, so try to avoid to lose that 15 to 20 marks. So first question on your screen: which one of the following is the major feature of the Indian economy? Bit of easy question. So we are starting with few easy questions. Which one of the following is the major feature of the Indian economy? A capitalist economy, a socialist economy, a mixed economy, and none of the above. Major feature of Indian economy. So answer would be your mixed economy. Neither we are true capitalist nor we are true socialist. So we are a mixed economy. Okay. So mixed economy means presence of both public as well as the private sector. Public as well as the private sector, that is the mixed economy. Public as well as the private sector, that is the mixed economy. Okay. Public as well as the private sector, that is mixed economy. Although before 1991 we had some soft corner towards the socialism, we had tilt towards the socialism, and after 1991 era we had tilt towards the capitalism, but we are mixed economy. Okay, moving to the next. Mixed economy in India means coexistence of large and small scale industries. Mixed economy means coexistence of large and small scale industries, foreign collaboration in economic development, and coexistence of public and private sector, and none of the above.
what would be your answer kuantu mixed economy कहले आमे कोन बुझुचु mixed economy कहले आमे कोन बुझुचु mixed economy कहले आमे कोन बुझुचु mixed economy is coexistence of public and private sector. Mixed economy is the coexistence of public as well the private sector. Please share this session. Please share with your friends, those who are giving exam this time. It's an important session as far as your prelims is concerned. Okay, so next, which among the following is a characteristics of underdeveloped economy? Which of the following is a characteristics of underdeveloped economy? So developing economy, underdeveloped economy and a developed economy, these are on the basis of income. These are on the basis of income. So what is the characteristics of underdeveloped economy? It's vicious circle of poverty, raising mass consumption, growth of industries and high rate of urbanization. What would be the option with respect to the underdeveloped economy? If you see the underdeveloped economy, then this is vicious circle of poverty. That means it's a trap. So majority of the people in the underdeveloped economy, they're in the trap of poverty. They're in the trap of poverty, and this vicious circle of poverty has been developed by Naxse, one economist is there. Naxse, one economist is there who has coined this term, Ragnar Naxse. Okay, Nurkse, Naxse. So answer is A. Next, to eradicate the problem of poverty, 20-point economic program was launched for the first time in India in which year? 20-point economic program was launched in which year to eradicate the problem of poverty? Indira Gandhi gave the slogan that is Garibi Hatao, and with that slogan this poverty alleviation scheme was introduced. So first of all, 20-point economic program was launched, and what was that? What was the year? It was 7th July 1975. It was 7th July 1975. Okay, Rajendra एटा गेस करथिले बोधे कि 26 जनवरी 1951 रे आमे स्टार्ट करथिबा गेस करथिले बोधे राइट इज इट सो कि जनवरी 26 गोटे भलो दिन रे आमे स्टार्ट बोधे करथिले ओके सो 7th July 1975 okay next which of the following committee is related to the estimation of poverty in India? Which of the following is related to estimation of poverty in India? Vijay Kelkar committee, Suresh Tendulkar, SP Gupta and Lakadwala. Okay, so kota habo estimation of poverty. Estimation of poverty, that is Suresh Tendulkar committee. Suresh Tendulkar committee. Okay, no sorry, it's okay. Estimation of poverty. अच्छा, Suresh Tendulkar committee. But Lakadwala committee जो अच्छी, that is also related to identify or the number of poor. Number of poor. Okay. Tendulkar committee is the methodology. ये poverty line decide करिवा पई form करा जाइथिला, but ये Lakadwala होचंदी आपनकर number of poor people केते poor population अछि. And this SP Gupta committee is also related to your fiscal matter,
and Bijay Kelkar committee is also related to the tax. Okay, Bijay Kelkar committee is also related to the tax. So here is the answer is what? Suresh Tendulkar committee. Okay, next. Poverty level in India is established on the basis of what? Per capita income in different states, household average income, household consumer expenditure, and slum population in the country. Kind of answer. Poverty level in India is established on the basis of per capita income in different states, household average income, household consumption expenditure or consumer expenditure, and slum population in the country. Multiple times this has been asked in your prelims. Multiple times this has been asked in your prelims. What would be the answer? It's the household consumer expenditure. It's the household consumer expenditure. Okay, and latest जो method अच्छी तेंदुलकर कमिटी रो जो latest method अच्छी, that depends on the mixed response period. That depends on the mixed response period. Okay, एटा को मन रखते हो जब क्वेश्चन आसे what was the method used by the Tendulkar committee? It was the mixed response period. Okay. Who conducts the periodical sample survey for estimating the poverty line in India? Who conducts the periodic sample survey for estimating the poverty line of India? Answer. Who conducts the sample survey for estimating the poverty line in India? Niti Aayog, CSO, NSSO, and Ministry of Social Justice. Sample survey, periodic sample survey, poverty estimation ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି? CSO and NSSO दीटा उपरे आपण confusion ହେଇ ପାରନ୍ତି. So answer होची sample survey जेहेतु अछि, that is National Sample Survey Organization. National Sample Survey Organization. Although ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ NSSO has been merged. Okay, तो NSSO National Sample Survey Organization. Yes. National Sample Survey Organization. कुआडे गले बाकी सब कुआडे गले बाकी सब कुआडे गले सैटरडे दिन आज के नहांती खाली सब ऑक्युपाइड या टीवी रे टॉप स्टॉक देखुचंदी रिजल्ट एनीवे नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ population increases in which of the following? According to the Malthusian theory of population increases in which of the following rate? Geometrical progression, arithmetic progression, harmonic progression, and none of the above. Kon of answer? According to Malthusian theory of population increases with respect to geometrical progression. Population increases with respect to GP. तेणु कहा जाउथला population increases in GP and food grain production increases in AP, arithmetic progression. Okay, तेणु कहा जाए population increases in GP and food grains increases with respect to AP. तेणु food shortages देखिबा को मिले. तेणु food shortages हमको देखिबा को मिले. Next question देखिबा. Again this has been asked multiple times. Which one of the following year is known as the year of Great Divide with regard to the population, after which there has been a continuous and rapid growth in India's population? Which one of the following is considered as the year of Great Divide? Which one of the following is considered as the year of Great Divide? Kon of answer? 1921. कहीं ना गोटे significant shift आमको देखिबा को मिलथिला 1921 रे with respect to the increase in population. गोटे significant shift आमको देखिबा को मिलथिला
with respect to increase in population. So ताकू ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोली कह जाउची 1921 को. ओके, ये क्वेश्चन भी आगुरु आसीची, केयरफुल रहिबे. India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to which of the following? India is a country is known as the demographic dividend. So its high population in the age group below 15 years, its high population in the age group of 15 to 64 years, population age group above 65 years, and its high to the total population. So answer is its high population in the age group of 15 to 64 years. Okay, 15 to 64 years. Okay, ये होची आपनकर आंसर 15 to 64. Working age group is higher, so demographic dividend. Correct? To obtain full benefits of the demographic dividend, what should India do? To obtain full demographic dividend, what should India do? Promoting skill development, introducing more social security schemes, reducing infant mortality, and privatization of higher education. What would be the answer? What would be the answer? Demographic dividend पाई हमको कौन करिवार अछि? Demographic dividend. Demographic dividend रे तीनटा जिनस को मन रखते good education, health care, and skill development. Good education system, health care, and skill development. So एठी answer कौन होबो? Promoting the skill development. So answer is A. Promoting the skill development. So answer is A. Okay. When population experts refers to the possible demographic bonus that may accrue to India around 2016, they are referring to phenomenon of which of the following? Demographic bonus. कौन अब आंसर एटा? Demographic bonus. Demographic bonus. Demographic bonus is nothing but demographic dividend. Demographic bonus is nothing but demographic dividend. That means the working age population is at a higher side. The working age population is at a higher side. That means a surge in the population in productive age group. A surge in the population in the productive age group, that is demographic bonus. Okay, demographic bonus. That means working age population is higher, so they will contribute in terms of economic growth or economic development. Okay. Next देखिए, which of the following committee was set up in India for identification of BPL families in the urban area? Which of the following was set up identification of BPL families in the urban area? कौन अब आंसर कौन? Identification of families in the urban area. Answer कौन अब? In the urban area. तेंदुलकर कमिटी, सक्सेना कमिटी, लकड़वाला कमिटी एंड हसीम कमिटी. ये हसीम कमिटी ही फॉर्म करा जाइथिला फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरिया. Identification of BPL families particularly in the urban areas. इथला हसीम कमिटी. किछि नुआ क्वेश्चन आज पाइबे एवं क्वेश्चन आपण भूल मध्य करिवे मु जानि छि आज. तेणु मु सेत पई कहूची जो माने मिस करूचंदी से माने बहुत बड़ जिनस मिस करिवे आज. तो हसीम कमिटी अर्बन एरिया रे आइडेंटिफाई करिवा पई पुअर पॉपुलेशन को फॉर्म करा जाइथिला. नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इट मेजर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट or development of the human resources. Okay, then what are the components which leads to development of human resources? That is health, education and purchasing power, or what we call the per capita. So health, education,
So health, that is life expectancy, educational attainment and per capita income. Life expectancy, educational attainment and per capita income. Okay, तो ये तीनोटी कंपोनेंट आपनकर एसडीआई रो पार्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो. क्लियर अछि? नेक्स्ट को जिबा. ओके, नेक्स्ट होची human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing knowledge, skill level capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth. कौन आप कुहतु? Better explained human capital formation कहले कौन? Individuals of a country to accumulate more capital. ये more capital माने एठी physical capital कथा पड़ी छी, और what you call the economic capital. But आमर पड़ी छी कोटा human capital कथा. Human capital कहले health, education, skill development. So increasing the knowledge, skill level and capacities of the people of the country. ये होची आपनकर related to the human capital. Knowledge, skill level, capacity. And this knowledge, skill level, capacity, this human capital is intangible in nature. This is intangible. This does not have any physical existence. This is intangible in nature. So answer would be what? Answer would be 2 and 4. C who's the answer? Answer would be 2 and 4. Tangible wealth means physical capital. Tangible means physical capital. So answer is C, 2 and 4. Okay. Which one of the following is not a constituent of Human Development Index? Which one of the following is not a constituent of Human Development Index? Human Development Index रा part नुहे. Per capita income गोटे part, life expectancy, gross enrollment ratio. So health and nutrition, it's not a part. Health and nutrition is not a part. केवल जदि health हेता ना confusion हेता ना जेहेतु in nutrition अच्छी, कारण health itself includes life expectancy of birth. तो नोटी health and nutrition जेहेतु देइची, इटा को अपना eliminate कर दे परिवे. So first one is the correct. A is not part of this Human Development Index. The Sustainable Development Goals were adopted in 2015 at which of the following? At which of the following? Kuandu. What about answer it? The Sustainable Development Goals were adopted in 2015 at which of the following? Rio +20 Conference, UN General Assembly, Paris Climate Deal and Johannesburg Summit. What about answer it? Rio +20 अपन को अनुसार आंसर. Rio +20 रा आंसर Rio +20 कहाँ से था associate? United Nation Conference on Sustainable Development ता रिलेटेड थिला, बट से कौन कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केबे अडॉप्ट करागला? जो अर्थ या अर्थ समिट जो हेतला दैट इज 1992 रे अर्थ समिट रो 20 इयर्स आपनकर 2012 रे हमको देखिबा को मिलछि. ओके, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोठो आसिला 2015 रे, व्हिच इज सब्सिक्वेंट ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. That is United Nations General Assembly, correct? United Nations General Assembly. United Nations General Assembly. That is Sustainable Development Goals were adopted in 2015. कारण 2000 रू 2015 Millennium Development Goal and 15 रू 30 होची Sustainable Development Goals. Next, which of the following is a feature of the SDGs? They are legally binding on the member states. They succeed the Millennium Development Goals. There are 17 goals and 169 targets. Which of the following are correct? Which of the following are correct? या भीतर कोटा ठीक.
They are legally binding on the member states, coach. Is it so? They are legally binding? Absolutely no. So answer would be they succeed the Millennium Development Goals, and there are 17 goals and 169 targets. There are 17 goals and 169 targets. Okay. Next. Goal 13 of the SDG deals with goal 13. गोल को मन रखिए 17 गोल्स को मन रखिए 169 टार्गेट्स को मन रखिबा दरकार नहीं बट 17 गोल्स को मन रखिए सो गोल 13 ऑफ द एसडीजीज डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल 13 ऑफ द एसडीजीज डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्लाइमेट एक्शन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लाइफ ऑन लैंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इट्स क्लाइमेट एक्शन गोल 13 बहुत पिला मानकर मने नाही कौन पाई मने रखु नांदी क्वेश्चन आसुची गोल उपरे से माने मैच ऑफ द फॉलोइंग पचारिबे गोल 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन मैच द फॉलोइंग करी की पचारिबे ओके इन इंडिया द नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग एसडीजीज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीति आयोग एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज statistics and program implementation, Ministry of Finance. Which of the following is correct? Nodal agency for monitoring SDG. Which of the following is correct? Fast. It's the Niti Aayog. Nodal agency जे कि आपनकर SDG index जरिया रे monitor करूची progress with respect to different goals under the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके जे एसडीजी इंडेक्स जरिया रे जे मॉनिटर करूची ऑफ डिफरेंट प्रोग्रेस बाय डिफरेंट स्टेट्स जदि स्टेट्स अचीव करेबे ऑटोमेटिकली द कंट्री विल अचीव तो प्रथम स्टेट्स को अचीव करिवार अछि सो एसडीजी इंडेक्स जरिया रे से कोन करूची कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करूची फॉर द स्टेट्स की टू नो द एग्जैक्ट प्रोग्रेस ओके Moving to the next, which of the following pairs is are correctly matched? कोंदु आंसर एटा ए टाइप रो क्वेश्चन आपण देखिबे एग्जाम रे अक्टोबर 12 रे गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग गोल 5 जेंडर इक्वालिटी गोल 12 क्लाइमेट एक्शन कोन अब आंसर ऑलरेडी क्लाइमेट एक्शन हमें देखि सरलेनी गोल 13 रे अछि गोल 12 होची रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन responsible consumption and production and 3 and 5 good health and well-being and gender equality so answer is 1 and 2 obviously third is not correct कारण third होची goal 13 होची climate action गोल 12 होची आपनकर रिस्पांसिबल आपनकर एटा जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन सो रिस्पांसिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस दैट डील्स विद द गोल 12 ये क्वेश्चन ए टाइप रो ही आपण देखिबे ओके नेक्स्ट देखिबा इंडियाज एसडीजी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग is aligned with which of the following in India's SDG index prepared by Niti Aayog is aligned with which of the following Global Human Development Index, National Indicator Framework, World Bank Ease of Doing Business Index, UNDP's Multidimensional Poverty Index kaha saito aligned he ki achi SDG index gudiko kaha saito aligned he ki achi kaha saito kondu फास्ट जदि एसडीजीज रो इंडेक्स गुड़िक देखिए जो गुड़िक नीति आयोग द्वारा फ्रेम करा जाउची या नीति आयोग द्वारा इवालुएट मॉनिटर करा जाउची दैट इज अलाइंड विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑन द नेशनल लेवल व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑन व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग जो इंडिकेटर्स गुड़िक अछि आपनकर एसडीजी इंडेक्स रे सेही इंडिकेटर्स गुड़िक आपण एठी भी देखि परिबे The same indicators you will find
in the national indicator framework also. Okay, এটা को मन रखते हुए important question गोटे national indicator framework मन रखते हुए एटा को. Next, what has been kept under the purview of GST? What has been kept under the purview of GST? ये जो चारोटी अच्छी इमान को भितर कोटा GST under रे रखा जाइछि. Which of this following has been kept under the GST? First देखंतु alcohol for human consumption, electricity, petroleum products and ghee. इमान का भितर कोटा अच्छी GST भितर. Alcohol obviously not present. Alcohol is not present under GST. It's still in the VAT or state tax आपण कहि परिबे. That is the reason the price of petrol, price of alcohol varies from state to state, number one. Number two, electricity also comes under the state tax regime, and the petroleum products are also varies from state to state because state imposes tax. So ghee is the only product on which GST has been imposed. Ghee is the only product on which GST has been imposed. GST opere you will definitely get one or two questions due to this what? Due to this reform or rational change जो देखिबा को मिलुची definitely अपन को देखिबा को मिलिबो. Okay, it's an advertisement. Advertisement होउची Arambh 10.0 platinum and gold. Okay, moving to the next question. Consider the following actions by the government. Considers the following actions by the government: cutting the tax rate, increasing the government spending, abolition of the subsidies. In the context of economic recession, which of the above actions can be considered as a part of the fiscal stimulus packages? Fiscal stimulus packages. What is the meaning of fiscal stimulus? That is the expansionary fiscal policy. What is the meaning of stimulus? Expansionary fiscal policy. This is the fiscal stimulus package, what we call. So expansionary fiscal policy means reducing the tax and increasing the expenditure, public expenditure. Reducing the tax and increasing the public expenditure. If you see the cutting the tax rate, yes, people will have more money. They can spend money in the economy. So tax ko kameiba. That is expansionary fiscal policy. Increasing the government spending, yes, again more money would go to the people. Okay, so seita bi gote expansionary fiscal policy, fiscal stimulus, and abolishing the subsidies. That means tightening of fiscal policy. This is something contradicting this fiscal stimulus. Fiscal stimulus money, that means we have to provide more subsidies. Okay, that means third option is contradicting the main question. So fiscal stimulus koile only 1 and 2. So answer A, that is 1 and 2. A would be the right answer, 1 and 2. Next देखिए, which of the following statements are true for the income tax in India? The first one is income tax. Income tax जोटा को हमें direct tax बोली कहूचे, मन रखते बेटा. Income tax को हमें direct tax बोली कहूचे. It is a progressive tax. कहीं की progressive tax बोली कहा जाऊँची. Now with the increase in income, tax structure also increases. With the increase in income, tax structure also increases. I think you know this. In India, we have different slabs for different tax rates. We have different slabs or जो different income slabs पर different tax rate होचे. That means higher the income, higher the tax. That is the progressive tax. So progressive tax. And again the direct tax मु कही direct tax depends on what? Let me tell you. Direct tax होची जहाँ ऊपर burden impose हबो से ही आपनकर tax pay करिवो. Okay, the person who on which tax is imposed, the person who will pay the tax, that is the same person will pay the tax, same person will bear the burden. That is what we call the direct tax. So income tax is a direct tax. It is collected by the state governments. It's not collected by the state government. It's the union government who collects. Okay, income tax. It is a proportional tax. Obviously, it is contradicting with this. कारण जदि progressive कही चंदे पुनी proportional कहीं की कहिबा. So it's not a proportional tax. So इटा को जदि आपण देखिबे only 1 and 2 are correct.
Okay, only 1 and 2 are correct, that is the B. B is the correct answer. Clear? Next. Consider the following statements about the agriculture focus scheme inspired by the aspirational district program. Kondu kon habo answer? Aspirational district program, agriculture focused scheme. It targets 100 low performing districts across India. The focus is on improving yields, irrigation, access to agricultural resources. It is primarily aimed at the urban and peri-urban agriculture. सरकारंकर गोटे आसीथिला प्रधानमंत्री धन्य धान्य एग्रीकल्चर धन्य धान्य एग्रीकल्चरल स्कीम, प्रधानमंत्री धन्य धान्य एग्रीकल्चरल स्कीम गोटे आसला. ओके, योजना जोटा आम कहे से धन्य धान्य एग्रीकल्चरल स्कीम अनुसार कौन अच्छी ना 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जोटा अपन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अच्छी से भली भाव में 100टी लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सेटा को आइडेंटिफाई करा जाइछि एवं डायरेक्टली तार प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करबा पई टारगेट करा जाउछि. नंबर 1. नंबर 2, द फोकस इज ऑन इंप्रूविंग यील्ड, इरिगेशन, एक्सेस टू एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस. द स्कीम इज प्राइमरली एम्ड एट अर्बन पेरी-अर्बन. ऑब्वियसली नुहे से आपनकर एग्रीकल्चर से अर्बन रे हो किंबा आपनकर रूरल रे हो, से हिसाब रे 1 and 2 आर करेक्ट. प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना और समथिंग टिके देखिने बेटा. तो तार मेन ऑब्जेक्टिव होची जेमती एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुडी को अछि सेमती 100टी लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ए डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करा जाउछि एवं ता ऊपर काम करा जाउछि इंप्रूवमेंट पाई प्रोडक्टिविटी. With reference to the scheme inspired by the Niti Aayog's aspirational district program, consider the following. It includes agriculture, allied sectors like horticulture, dairy and fisheries. जेमती ये जो प्रधान सेम स्कीम आपनकर जोटा अछि. ओके, horticulture, dairy, fisheries. It aims to replicate aspirational district methodology, focusing on outcome based intervention. तार मेन आइडिया होउची यस कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना. चांसेस अच्छी या ऊपर क्वेश्चन आसीबो कारण बजेट रे ही एटा को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला, तेणु मन रखथिबे चांसेस अच्छी क्वेश्चन आसी पारे. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी को रेप्लिकेट करिकी 100 सच लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट रे एटा को इंट्रोड्यूस करा जाइछि. नंबर 1. नंबर 2, इट इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट. ऑब्वियसली नुहे कारण एक्सक्लूसिवली जेहेतु अछि एटा एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सो फर्स्ट दुईटी स्टेटमेंट होछि करेक्ट. आंसर होछि आपनकर 1 and 2. ओके, आंसर होछि आपनकर 1 and 2. Next देखिबा, consider the following statement regarding the financial stability report. Financial stability report. It is published biannually by the Reserve Bank of India. The financial stability report assesses the strength of India's financial system and identifies risk to stability. The report is prepared by the subcommittee of the FSDC. कौन हबो आंसर कोन? जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी ऑफ द एफएसडीसी. आंसर कौन हम? इट द फर्स्ट मन रखिए आरबीआई तरफ गोटे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करा जाए. ये तो प्रथम क्वेश्चन कारण रिपोर्ट आउ इंडेक्स बेले बेले से माने पचारुचंती, रिपोर्ट आउ इंडेक्स से माने बेले बेले पचारुचंती. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय और बायएनियली पब्लिश्ड कहा द्वारा करा जायथिला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. It assesses the strength of India's financial system. It assesses the strength of India's financial system, identifies the risk to stability, and report is prepared by the subcommittee of the FSDC, जोटा financial stability जो development council तंगर होची ता द्वारा. So answer होची आपनकर D, all of the above. Okay, answer होची D, all of the above. RBI एटा को करूची Financial Stability Development Council. Next देखिबा, consider the following statement about the Financial Stability Development Council. Financial Stability Development Council. It was established in 2010 to ensure financial stability in India. The council is chaired by the Governor of the Reserve Bank of India, and the members include the heads of major financial regulators like SEBI, IRDAI and PFRDA. कौन अब आंसर कौन?
यार आंसर कौन हम कहूँ द गवर्नर is the chair of RBI governor. It was established in 2010 to ensure the financial stability in India. That is the first one. Second, the council is chaired by the governor of the Reserve Bank of India. It's not the governor of Reserve Bank of India, rather the finance minister, union finance minister. That is absolutely correct. Union finance minister. Its members include heads of major financial regulators like SEBI, IRDAI and PFRDA. That is Provident Fund Regulatory Development Authority, Insurance Regulatory Development Authority of India and this SEBI, okay, stock market regulator ji achan. So answer apankar kono hijibo 1 and 3. Kahinki second da hoji incorrect karon seti finance minister is the head or chairperson. Next, who publishes the global Findex database? Who publishes the global Findex database? International Monetary Fund, World Bank, World Economic Forum and OECD. Kaun haba answer kon? Who publishes this global Findex database? That is World Bank. World Bank publishes global Findex database. Okay, World Bank. See, global Findex database we said out here dekhiba. Consider the following statements regarding the global Findex database. It is published every 3 years by the World Bank. Every 3 years by the World Bank. It provides data on financial inclusion, including access to accounts, digital payments and credit. It is jointly published with the IMF and UNDP. First and third contradict करूचे देखुथिबे आपण. Already हमें global Findex database किए करिचे जानिचे. तो एटा को आपण eliminate तो easily कर देई परिबे. So every 3 years 3 वर्ष को थरे ये आपनकर वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश होची ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस. Okay, and it provides data on the financial inclusion, access to accounts and digital payment. So answer is आपनकर A 1 and 2. Answer होची आपनकर A 1 and 2. Next, the digital payment index is published by which of the following? Kondu. The digital payment index is published by which of the following? The digital payment index which of the following? It is by the Reserve Bank of India. It is by the Reserve Bank of India. Digital payment index is published by the Reserve Bank of India. Next देखिबा. The financial inclusion index is published by which of the following? The financial inclusion index is published by which of the following? Kondu. Financial inclusion index again by RBI, correct. ये इंडेक्स गुडी को इम्पोर्टेंट टिके मन रख देथिबे. इंडेक्स गुडी को इम्पोर्टेंट कारण चांसेस अच्छी से माने पछरिबे. Recently, the Reserve Bank of India has granted in principle approval to which bank to transition from a small finance bank to universal bank. From a small finance bank to universal bank. को small finance bank to universal bank को बैंक को वर्तमान गोटे रिसेंट आपनकर मिलिछि कोन स्टेटस मिलिछि कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रो से निजको यूनिवर्सल बैंक को कन्वर्ट कर दे पारिबे. आंसर होउछि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक रो मेन आइडिया कोन ना नीस बैंक और जहा को हमें कहउछे डिफरेंशियल बैंक. नीस बैंक और जहा को हमें कहउछे डिफरेंशियल बैंक. बैंक विथ डिफरेंसेस. And what kind of differences? The semane first of all
फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, सेकेंड जो एमएसएमई सेक्टर्स को खास करके टारगेट करेंगे, रूरल डिप्राइव्ड एमान को टारगेट करेंगे. सो आंसर इज होची एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट एटा को बर्तन यूनिवर्सल बैंक रा स्टेटस मिली. दैट मीन्स स्मॉल फाइनेंस बैंक हिसाब रे जहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस थिला दैट विल बी रिमूव्ड. स्मॉल फाइनेंस बैंक हिसाब रे जहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस थिला that will be removed. Consider the following eligibility criteria for a small finance bank to transition into a universal bank. को criteria गुड़िक अच्छी जोटा कि हमें transition रे हमको देखिबा को मिलेबो. Must have a scheduled bank status for at least 5 years. That means second schedule of RBI Act 1934. Second schedule of RBI Act 1934 ये आपनकर scheduled bank ही थिबो. Should have a share listed on the recognized stock exchange. Stock exchange रे भी listed ही थिबो. Must have a minimum net worth of 1,000 crore. Should maintain gross NPA. Gross NPA, that means equal or less than 3%. Net NPA equal or less than 1%. The last 2 financial years. ये criteria जदि से meet करूची तबे आमे ताकू universal बैंकिंग बोली कही परिबा. तो ये आंसर होची आपनकर ऑल सी. ओके, ये आंसर होची आपनकर सी ऑल 1 2 3 4. Small finance bank in India primarily established to provide banking services to large corporation, serve micro and small businesses, small farmers and unbanked sections. Answer is obviously B. Serve micro and small businesses, small farmers and unbanked section. Okay, MSMEs को खास करके समाने टारगेट करेंगे. MSME. Next देखिबा. What is the co-lending arrangement as per the RBI? कहंतु what is the co-lending arrangement as per the RBI? Co-lending arrangement कहले कौन? Co-lending arrangement होची जोठी कि बैंक एंड NBFC मिसिकी समाने रिस्क को शेयर करिवे and extend a loan. A partnership where 2 or more lenders share credit risk, extend loans to the borrowers jointly. Okay, ये होची आपनकर co-lending. ये होची आपनकर co-lending. A partnership where 2 or more lenders share a credit risk and extend loans to the borrower jointly. That is co-lending arrangement. That means NBFC out a bank मिसी के समाने जनों को लोन देवे so that they share the risk. Next, which organization publishes All India Consumer Price Index in India? या All India Consumer Price Index कि ये All India Consumer Price Index को publish करूची इंडिया रे. आंसर कौन होबो? CSO, Central Statistical Office. CSO, Central Statistical Office. What is the base year for India's current CPI series? What is the base year for India's current CPI series? It is 2012 and proposed 2023 and 24. 23-24 26 रे 2026 रे एटा को चेंज करा जिवो 23-24 को. ओके, major difference between the CPI and WPI. CPI includes only industrial goods. WPI has larger weight for food. CPI has larger weight for food. WPI has larger weight for fuel, and it tracks. CPI tracks export. कौन हो कुंदु? Yes, 23-24. Yes, 23-24. ओके, सीपीआई अधिका कौन कैरी करूची फूड एंड आपनकर जो फूड एंड बेवरेजेस तार अधिका वेट अच्छी. डब्ल्यूपीआई रे हमर जोटा हमें कहूचे ना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन व्हिच इज मेजर्ड बाय डब्ल्यूपीआई तार अधिका वेट से कहा को दउची फ्यूल को. ओके, आउ गोटे डिफरेंस मु आपन कहबी. सीपीआई
measures price of both goods and services, whereas WPI only measures price of goods. Next, what is the primary purpose of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? Primary purpose of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. यार कौन main purpose कौन कहूँ? कौन purpose हो? To regulate commercial banks lending operation, to promote intergenerational equity in fiscal management and ensure macroeconomic stability. Fiscal responsibility budget management कहीं आसुची एबे देखिबे बहुत गुड़े का states रे कौन अच्छी election आसुची तो सरकार चाहिबो जितिबा पई election को सरकार बहुत गुड़े मनी बोरो करिकी फ्रीवी हिसाब रे बांटी चलिबो to win the election. बट ऑटोमेटिकली से बर्डन कहा उपरे पड़िबो कमिंग जनरेशन उपरे पड़िबो सरकार को उपरे पड़िबो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जदि बर्डन पड़ी चलिला तो देखिबे सरकार दिन दिन बैंक्रप्सी हे जिवो सो सरकार विल कोलैप्स सेति पई कोआ जाउची गोटे लिमिट रखिबा पई इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिसिट्स जेमती फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तेनु फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट कोन करूची टू प्रमोट इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड equity in fiscal management and ensure macroeconomic stability. That is B is the correct answer. Okay. Next देखिबा which of the following statement must be presented along with the union budget as per the FRBM Act. FRBM Act रे union या FRBM Act द्वारा union budget रे हमें को statement को present करूचे on the floor of the parliament. So budget सहित there are other 3 such statements which are presented on the floor of the parliament. एटा को मन रखते हुए काफी important ये question टी. There are 3 statements which are presented on the floor of the parliament along with the budget document. The first one is the macroeconomic framework statement. Second is the medium term fiscal policy statement and third is the fiscal policy strategy statement. The Finance Commission report अलगा भाव रे 280 आर्टिकल रे फाइनेंस कमिशन द्वारा प्रेजेंट करा जाए नॉट विद द बजेट. सो बजेट रे केवल 3टा अछि गोटे अछि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट दैट इज द B1213. नै इकोनॉमिक सर्वे बजेट सहित करा जाए नाही गोटे दिन पूर्वरु इकोनॉमिक सर्वे करा जाए ता पर दिन बजेट करा जाए इकोनॉमिक सर्वे बजेट सहित करा जाए नाही. ओके एवं वर्तमान बजेट ये जनरल बजेट सहित हमें रेलवे बजेट को मर्ज भी कर दीजिए सेटा ही मन रखिबे. नेक्स्ट देखिबो द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 was last amended in 2023. Which of the following provisions were introduced in 2023 amendment? कोन बेटा आंसर कोंतु. The Mines and Minerals Act 1957 was last amended in 2023. Which of the following provisions are introduced in 2023 amendment? देखिबो first one, introduction of a new list of 24 critical and strategic minerals. A critical and strategic minerals कोन critical and strategic minerals होची जोटा आपण कहि परिबे जो बैटरी सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट ए सबु पई जो गुडी को यूज करा जाउची यूरेनियम ए सबु जिंसो यूज आपनकर critical and strategic minerals. Empowering the central government to auction mineral concession for such minerals, introduction of exploration license for critical and deep-seated minerals, mandating states to create separate mineral reserve for the rare earth minerals. कौन होगा आंसर? स्टेट को कौनसी से बड़ी मैंडेट दिया जाए नहीं कि तमें तमरो सेपरेट रिजर्व बनाओ एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. इट्स अ वेरी नेचुरल ये जो आमे रिजर्व बोली कहूचे ये होची नेचुरल तो स्टेट सेपरेट केमती बनेबे सेटो. ओके तेनु 4 स्टेटमेंट को इजीली आपण एलिमिनेट करि परिबे. आंसर होची 1213.
Okay, 1, 2 and 3. Which of the following statement about China's role in the global critical minerals supply chain is correct? Kona answer kundu. Kafi interesting question. Which of the following statement about the Chinese role in the global critical minerals supply chain is correct? Which of the following is correct? China controls 30% of rare earth production globally. China controls 60 to 70% of rare earth production and 80 to 90% of the global processing capacity. China does not play a significant role in processing of rare earth mineral. China रे rare earth अच्छी सेइति पई semiconductor उपरे तारो monopoly अच्छी, dominance अच्छी. Okay, तो answer कौन होबो? China controls 60 to 70% of rare earth production and 80 to 90% of the global processing capacity. That means जो semiconductor हमें कहूचे ना, से semiconductor. Okay, B होची आपनकर answer. What is the primary objective of the Maritime Ports Development Act? बर्तन गोटे amendment आस्तेला Maritime Ports Development Act. तार main purpose कौन? Main purpose देखो to consolidate laws relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business, ensure utilization of India's coastline. So basically, जो अपन करो Maritime Ports Development Act अच्छी, through that what we are doing, we are facilitating the trade. Okay, facilitating the trade, promoting ease of doing business, नुआ ports गुड़ी को develop करिबा को चाहूँचु, port led industrialization हम establish करिबा को चाहूँचु, port through रे export को बढ़ेबा को चाहूँचु, ये सब जिनसो हमें देखिबा को चाहूँचु काउ through रे Maritime Ports Development Act through रे. Okay, question जदि आसे तबे एटा को answer आपण करिवे. Next देखिबा. The Maritime State Development Council is established under the Act 2. कौन हबो देखंतु? Maritime State Development Council. Maritime State Development Council. ये कौन ପାଇଁ establish करा जायछि? Maritime State Development Council. एटा को कौन ପାଇଁ establish करा जायछि? The reason होछि make recommendations on the legal framework, port sector growth, competition, efficiency and port connectivity. मुझे जेमति कहली port led industrialization को establish करिबा, ease of doing business को establish करिबा, trade facilitation को improve करिबा. Trade facilitation ପାଇଁ जदि मु आपन गोटे statistics देबी, गोटे टाइम रे जेतबेले गोटे शिप रो टर्न अराउंड टाइम थला अराउंड 40 days आम कंट्री रे, सेटा को कम करी कि हमें 25 hours को नहीं के आसीचु, and the next target would be to make it 20 hours. तेणु make recommendations on the legal framework, port sector growth, competition and efficiency and port connectivity. This is what the idea behind the Maritime State Development Council. Okay, a gote या पर question. Maritime State Development Council रो ex officio chairperson किए. Maritime Development State Development Council रो ex officio chairperson किए. ये होचंदी Union Minister of Port, Shipping and Waterways. Okay, Union Minister of Port, Shipping and Waterways. ये होचंदी आपनकर Maritime State Development Council रो ex officio chairperson. That means by default. Answer करंतु एटा. Next question. Which of the following statements about nano fertilizer is are correct? Nano fertilizer बोली हमें कहा को कहूचे? Nano fertilizer बोली हमें कहा को कहूचे? Nutrients are encapsulated within nano materials measuring less than equal to 100 nanometers. They enable controlled release and slow diffusion of nutrients into the soil. Okay, ये जिनसे कौन देखो? Nano fertilizer आमे इथि पाइन करूचे. आपण सुनी थिबे nano urea. Nano urea बोली काहे की कोआ जाउची? Nano urea इथि पाइन कोआ जाउची ना त जो particles गुडी को काफी छोटो, nano छोटो and easily dissolve in the water. जदि easily dissolve ही परिबो तो run of water रे अधिका आपनकर wastage हबो नाही when there is a flooded kind of irrigation on the agricultural field. तेणु जेहेतु size रे छोटो, particles are small, easily dissolve in the water. That is the first criteria or that is the first reason
why we are going for this nano fertilizer or the nano urea. So controlled release तार जो efficiency को increase करिवो, controlled release and slow diffusion of nutrients in the soil. तेणु धीरे धीरे से तार कौन करिवो nutrients से dissolve हवो एवं या तार use of efficiency बढ़िवो. सेइथि पई गोटे terminology अछि आपण मन रखतिबे fertigation. Fertigation, fertilizer plus irrigation. Fertilizer plus irrigation. Irrigation means obviously the micro irrigation and the chemical fertilizer. When two mixes, what we call the fertigation, which increases the water use efficiency, which increases the water use efficiency. So nano materials measuring 100 and less than nanometer, आपण कहि परिबे nano urea या nano fertilizer को नेकी. Okay, next देखिए, what is the overall priority sector lending target for the small finance bank under the revised RBI norms effective from financial year 25-26? Small finance bank पई जो revised करा जाइछि priority sector lending को केते रखा जाइछि, priority sector lending रो target या percentage केते रखा जाइछि. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रो एक्चुअली परसेंटेज थिला 75, बर्तमान कमी की सेटा हिची 60%. तेणु प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहले कोन ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल आपण कहि परिबे जेमती हाउसिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, ये होची प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर ये होची प्रायोरिटी सेक्टर थिला. तेणु प्रायोरिटी सेक्टर को बर्तमान रिवाइज करा जाइछि. आगुरु जो 75% थिला सेटा को कम करिकी 60% को आना जाइछि, सो दैट मोर लिक्विडिटी विल बी अवेलेबल विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दे वुड इंजेक्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एज वेल. कारण आपण जानि थिबे जोटा सरकार बर्तमान चाहूछथि मोर लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी सो दैट ग्रोथ रेट कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, ई जो जिंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the objectives of the RBI revising this priority sector lending norms of small finance bank is to कौन पाई ये small finance bank रो priority sector lending criteria को revise करा गला. Why it has been revised? मैं already explain करी सारी ची. तार options आपण देखिबे. Increase mandatory lending to all sectors, easy lending restrictions and allow diversification, reduce liquidity in banking system, increase SFB exposure to only to agriculture. तार मेन आइडिया कोन ना, इजी लेंडिंग रेस्ट्रिक्शन जत्ते तांको पाखरे कोन रहिबो, डाइवर्सिटी रहिबो, जत्ते तांको पाखरे ऑप्शंस रहिबो से सेते अधिका सेक्टर को लोन दे परिबे. सो एक तो डाइवर्सिफिकेशन को अलाउ करा जिवो, कारण 75 माने टोटल अमाउंट रो 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाउतला. दैट मीन्स ओनली 25% दे कैन गिव लोन टू एनी सच other than the priority sector lending. So now they have 40% for the other than priority sector lending. That means it allows the diversification and easy lending restriction. That means lending restrictions को ease करा जिवो. That means आपण कहि परिबे अधिका credit supply, credit facilities, credit extension करा जाई पारिबो. Moving to the next, which organization releases the SDG index annually as part of the sustainable development report? को organization प्रति वर्ष as part of this sustainable development report हिसाब रे से कौन करंती, डेटा रिलीज करंती, इंडेक्स रिलीज करंती. को संस्था? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क तरफरु ये रिलीज करा जाए. मन रखते बेटा. What was India's SDG index ranking in 2025? This is very important as far as this year prelims. प्रथम थर पाई, it's not नीति आयोग, it's not नीति आयोग my dear, ये होची यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. ओके, शाश्वत सॉल्यूशंस नेटवर्क. इंडिया पाई सेटा होची नीति आयोग जे एसडीजी इंडेक्स नहीं किया से. It shows the competitiveness among the states with respect to the progress of states with related to different kind of indicators under the SDG. Okay, now moving to this. What was India's SDG index ranking in 2025? For the first time, India has entered below 100 ranking, that is 99.
below 100 ranking, that is 99. So India's ranking is 99 as per the 2025 SDG index. Which country tops the SDG index 2025 globally? Which country tops the SDG index 2025 globally? Kota top kala. Answer please first. Finland. Okay, Finland has topped this rank. Okay, the Sevilla commitment primarily seeks to which of the following? The Sevilla commitment, kuantu important question eta ithar pai. The Sevilla commitment is primarily seeks to which of the following? Reduce carbon emission in developing countries, close the annual SDG financing gap in developing countries, reform global trade policies and promote universal health coverage. As you know, developed countries mane developing countries को help करूचंती to achieve the target of SDGs. तो recently US से finance करिबा पाई मना कर देला कि we are not going to help these developing countries to achieve that SDG index or SDG goals. कला this is none of our business. तो ये जो Sevilla commitment अछि, ये Sevilla commitment होची the annual SDG financing gap in developing countries. Close the annual SDG financing gap in developing countries. Under the Sevilla commitment, developed countries has given some amount of commitment with respect to financing the developing countries to achieve the sustainable development goals index or to achieve the goals of the sustainable development. Okay. What is the meaning of this asset monetization? What is the meaning of this asset monetization? आपण देखिए जो पुराना हवेली थिला, जो पैलेसेस गुड़िक थिला, ताकू सरकार कौन कले प्राइवेट रे लीज दे देले अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम. तर आइडिया कौन होची ना क्रिएटिंग न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स. तेणु सेगुड़िक अंडर यूटिलाइज्ड ही कि अछि ताकू हेरिटेज होटेल भाव रे से यूज करेंगे को मैंने जो मैंने ग्रुप ऑफ होटेल्स वाला अच्छा या होटेल ग्रुप्स अच्छा से हेरिटेज होटेल भाव रे यूज करेंगे मेंटेनेंस तांकर रहिबो बट ये जो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी से माने कहा को देले गवर्नमेंट को देले यूनियन गवर्नमेंट को तो यूनियन गवर्नमेंट रे काइंड ऑफ ए जनरेशन ऑफ व्हाट इनकम और जनरेशन ऑफ रेवेन्यू आपण कहि परिबे. ओके So creation of more revenue resources underutilized. Next देखिए The Rising Northeast Summit 2025 was hosted by which of the following ministry? The Rising Northwest Summit 2025 was hosted by which of the following ministry? को ministry द्वारा ओके ये आपनकर राइजिंग समिट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट हेतला जोटी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी joined as a guest. Ministry of Development of Northeastern Region. Ministry of Development of Northeastern Region was the organizer of this Northeast Summit 2025. Next, how did the Prime Minister describe the 8 Northeastern states in the summit? ये जो 8 Northeastern states जो माने अछंती से माने को को भली भाव रे डिस्क्राइब करथिले प्राइम मिनिस्टर मोदी कोन कहिथिले कोन ना देथिले ईस्टर्न स्टार अष्टलक्ष्मी बैम्बू बेल्ट राइजिंग टाइगर्स what the name has been given the Ashtalakshmi. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन कहिसेंती अष्टलक्ष्मी मन रखथिबे to this northeastern states summit रे northeastern states को कहा जाइछ. नेक्स्ट देखिबा which agency conducts the periodic labor force survey? Which agency conducts the periodic labor force survey? Reserve Bank of India. Second which Ministry of Labor and Employment, National Statistics Office or Statistical Office and Niti Aayog. कौन अब आंसर कौन? Periodic labor force survey किए करे? Ministry of Labor, Employment, National Statistical Office किए करे?
Periodic labor force survey is done by National Statistics Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay. Next देखिए what is the labor force participation rate? Labor force participation rate कहले हमें कौन बुझु? Percentage of employed persons in the population, percentage of the persons in labor force, percentage of the persons in the labor force working or seeking available for work in the population. ठीक अछि? Percentage of persons in the labor force in the population. तो ये होचे अपन करो labor force participation rate रो definition. Total population रो कितने percent जो माने labor force रे include होचंदी working or seeking the work. Okay? काम खोजुचंदी और काम रे अछंदी. Vision jam से यहीं पढ़िबा. Vision jam international seaport is primarily developed to cater which of the following? Container transshipment. International countries को transport करिबा पई container transshipment सहित पई कुआ जाउची. Vision jam international seaport कहि परिबा आपण. Which state government is developing the Vision jam port और Vision jam international seaport भाबरे कहा को स्टेट रे हमको देखिबा मिलुची? It is Kerala. मन रखते बेटा. It is in Kerala, not Karnataka. It is in Kerala. The District Mineral Foundation created through an amendment to which act? The District Mineral Foundation को act रो amendment को करा जाई District Mineral Foundation को establish करा जाई. It is Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Under that DMF has been created. Under that DMF has been created. District Mineral Foundation. What is the primary objective of the District Mineral Foundation? To promote mining export, to work for the interest and benefit of the person and areas affected by mining operation, to regulate mining leases, to provide loans to the mining companies. The primary objective of the DMF is to work for the interest and benefit of the person affected by the mining operations. So B होचे आपनकर answer. Okay? B होचे आपनकर answer. Mines and minerals under रे एटा आपनकर develop करा जायछि. जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट गुडी को अछि माइनिंग अफेक्टेड पीपल को पाई वेलफेयर पाई ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एस्टाब्लिश करा जायछि. एबे रिसेंटली आपण सीएजी रो रिपोर्ट देखिथिबे ओडिसा रे डीएमएफ रो फंड को जो इंजीनियर्स थिले से डिस्ट्रिक्ट रे से ताकू मोबिलाइज और ताकू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड पर्सनल यूज पाई से ताकू यूज करिचन. Which of the following policy measures contribute to India's strong domestic demand? Which of the following policy measures to contribute India's strong domestic demand? India रे domestic demand केतबळे देखा जिवो. Tax or business reform, rapid urbanization, demographic dividend, UPI and JAM Trinity. Domestic demand कौन पाई देखा जिवो? एबे देखंतु GST कट करा गला. Rationalization of GST कौन कोहा गला? GST बचत उत्सव कहेंगी so that people will demand more goods and services or existing consumption basket रे they can do save more. Okay? तो ऑप्शन जो अच्छी ए से होची करेक्ट. टैक्सेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म. टैक्सेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म डेफिनेटली आपनकर कोन करिवो ये स्ट्रांग एंड डोमेस्टिक डिमांड पाई इंक्रीज करिवो. पॉलिसी मेजर्स कंट्रीब्यूट द स्ट्रांग एंड डोमेस्टिक डिमांड. ओके Fine. Next देखिबा. The Waves Summit focuses on which of the following as a key driver of future GDP growth? Okay, key driver of future GDP growth. ये Waves Summit हेइतला जोटी प्राइम मिनिस्टर मोदी attended that summit. ये कहा को फोकस करथिला और को कंपोनेंट आपनकर GDP future GDP growth रे हेल्प करिवो. मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिव इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल. जो वेव्स टे आपनकर थिला जेमती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
रेडियो ये सब से जॉइन करथिले सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द क्रिएटिव इकोनॉमी वेब समिट वाज रिलेटेड टू क्रिएटिव इकोनॉमी रैपिड अर्बनाइजेशन टू बेस्ट ये हूँ आपंकर टैक्सेसन एंड बिजनेस रिफॉर्म जीएसटी कट कॉर्पोरेशन टैक्स कट ये हूँ सबुठ मोस्ट अप्रोप्रिएट जदि प्रायोरिटी हिसाब से देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन आपंकर डोमेस्टिक कंजप्शन को न भी बढ़े पारे अर्बनाइजेशन डज नॉट नेसेसरली लीड्स टू डोमेस्टिक कंजप्शन ओके बट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पीपल जोटा आपंकर डिस्पोजेबल इनकम आम कौन ओके आफ्टर पेइंग द टैक्स वेब समिट मु कहली क्रिएटिव इकोनॉमी नेक्स्ट देखिबा consider the following statement regarding the web summit 2025 web summit 2025 was held in New Delhi and focused on India's renewable energy potential मैं भी कहली अपन को wave is related to the entertainment industry so इटा को आपण eliminate कर दी पारिबे waves aims to unlock $50 billion market by 2029 in the global entertainment and creative sector and the Prime Minister highlighted India's creative economy as a key driver for future GDP growth so answer is आपनकर 213 जो इन्फ्लुएंसर माने होछंदी YouTube चैनल्स गुडी को होछंदी पॉडकास्ट करूछंदी ओके इस सही विषय रे ही इवेंट थिला वेब्स करिके 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट देखिबा Repairability index for mobile phones and electronic products in India is being launched by which of the following? Repairability index of mobile phones and electric products in India is being launched by which of the following? Repairability index. It is by the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Okay? Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Which of the following is the reasons for introducing the right to repair in India? ये right to repair हमें कहीं की इटा को start करिचे. India is the third largest contributor to global e-waste after China and US. Manufacturers often create barriers to third-party repair, limiting consumer choice. It supports the transition towards a circular economy and sustainable consumption. राइट टू रिपेयर माने कौन ना राइट टू रिपेयर हूँ आपड़ देखिए बहुत गुड़े जो कंपनी गुड़िक अच्छा डिजिटल डिवाइस से प्रोड्यूस करुँचे रिपेयर को रिस्ट्रिक्ट करुँचे थरे जब खराब हो यू हैव टू परचेज ए न्यू वन देयर इज ए नो स्कोप फॉर द रिपेयर तेणु जेहेतु रिपेयर हो पारुनी एवरी टाइम वी आर प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट एवरी टाइम वी आर डिस्पोजिंग द ओल्डर वन से देखिए जो रिसाइकल इकोनॉमी करने वेस्ट मैनेजमेंट करने आम चेष्टा करुचे जमी बैटरी को आम जमी रिसाइकल करा पारिबो तेणु रिसाइकल या सर्कुलर इकोनॉमी को सी जमी प्रमोट करिवो कारण जो बैटरी हो और द माइक्रोचिप गुड़िक जो अच्छी डिजिटल डिवाइस रे यूज करा जाउची दैट नीड्स व्हाट दिस आपनकर माइक्रोचिप और दैट नीड्स यूज ऑफ दोस रेयर अर्थ मटेरियल्स व्हिच इज हैविंग द लिमिटेड आपन कहि परे रिजर्व इन इंडिया we have to depend on other countries. So to meet that shortages constraint, आमे circular economy ऊपर focus करूचु. We are focusing on the refurbish, repair also. So कोनोसी company एभली कहि परिबे नाही कि this product is beyond the repair, you have to go for a new one. Okay? तो सेहिति पई right to repair in India को आमे बर्तन focus करूचे to achieve that circular economy. Answer होची obviously all the three are correct. So 1, 2, 3. Next. Consider the following statements regarding India's role at the World Bank Land Conference in 2025. World Bank Land Conference in 2025. India assumed the role of country champion at the conference. India's Swamitha scheme and Gram Manchitra platform were highlighted as the examples of inclusive, technology-driven rural governance. Swamitha scheme focuses on the urban property titling through satellite mapping, and this Gram Manchitra has been appreciated for promoting climate resilience and infrastructure planning in the global south context. जो आपनकर वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस होता सेठी स्वामित्व स्कीम को काफी प्रेज करा जाइछि
सिमिलरली ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को भी प्रेज करा जाइए. बट स्वामित्व स्कीम वाज रिलेटेड टू व्हाट? द ड्रोन मैपिंग ऑफ लैंड इन द रूरल एरिया. द ड्रोन मैपिंग ऑफ द लैंड ऑन द रूरल एरिया. ओके, ये आपनकर स्वामित्व स्कीम एवं अर्बन सॉरी जो आपनकर लैंड राइट्स प्रोवाइड करबा इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वामित्व स्कीम. लैंड राइट्स प्रोवाइड करबा इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वामित्व स्कीम. ओके, तो से हिसाब रे थर्ड स्टेटमेंट को यू कैन मेक इट रॉन्ग. सो आंसर वुड बी 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 would be the answer. Okay. Next देखिबा, which of the following statement is correct regarding the Swamitva scheme? It aims to establish clear ownership of rural property by mapping land parcels using drone technology. Rural property को drone technology माध्यम रे या unmanned aerial vehicle माध्यम रे ताको mapping करा जिवो. 68,000 square kilometer have been surveyed under the scheme, and the scheme has led to land monetization worth over rupees 1.16 trillion. कौन होगा आंसर? आंसर होची तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट D 1, 2 and 3. ओके, D 1, 2 and 3 तीनोटी जाक स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा, consider the following statements regarding the revised classification of MSMEs in India. MSME sectors को वर्तमान रिवाइज करा जाइछि. सही ऊपर गोटे क्वेश्चन देखंतु. The revised threshold have increased the investment limits 2.5 times and turnover limits by twice the existing level. 2.5 times investment, turnover होची twice. The enhanced credit guarantee over the MSME has been increased 5 crore to 10 crore. That is the अपन कहि परिबे double, twice the existing level. Credit guarantee for startup has been increased from 10 crore to 25 crore. That is 2.5 times. With no guarantee fee. A customized credit card scheme will provide of 5 lakh in credit to micro enterprises registered under the Udyam portal. So answer आपनकर कोन होबो? आंसर होची आपनकर उद्यम पोर्टल रे क्रेडिट कार्ड 5 लाख पर्यंत मध्ये मिलिची. बट से कोज द क्रेडिट गारंटी फॉर द स्टार्टअप 10 to 25 crore तो बढ़ीची जोटा मु 2.5 टाइम्स कहूची. दैट इज फॉर द MSME क्राइटेरिया भितर आपण देखिबे जो एक्जिस्टिंग MSME गुडी कथिला से एक्जिस्टिंग MSME रे एटा को इंक्रीज करा जाय. सो से हिसाब रे एटा को 1 to 4 आपण कहि परिबे. बट एटी गोटे जिंस मु आपण को कहि रखे, एटी गोटे जिंस मु आपण को कहि रखे टिके. हाँ, ये गोटे जिन आप रखे जो चेंजेस होती क्राइटेरिया रे से चेंजेस गुड़ा को आपको कही दिए कारण चेंजेस को जानिबा निहाती इंपोर्टेंट. क्वेश्चन आपनकर आसी पारे. ओके, माइक्रो पई देखंतु माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टमेंट माइक्रो रे केते थिला 1 crore सेटा रिवाइज हे गेला 2.5 crore. ओके, टर्नओवर थिला 5 या प्रॉफिट सेटा रिवाइज हे गेला 10. सेमती स्मॉल रे ही गला 10 to 25 कारण 2.5 इंक्रीज होची. मीडियम रे ही गला 50 रु 125. ओके, अच्छा एठी आपनकर 50 रु 100 टर्नओवर ये 250 रु 500. तो न्यू क्राइटेरिया होची 2.5 25 125 एंड 10 100 500 ये होची न्यू क्राइटेरिया. तेणु माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रे से माने डेफिनेटली मैच ऑफ द फॉलोइंग पचारला भली से माने पचारि परिबे. सेठी आपनको फाइंड आउट करिवार अछि आंसर. आंसर होची आपनकर A 1, 2 and 4. ओके, केयरफुल रहिबे क्वेश्चन आसी पारे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द critical mineral mission announced in budget 24-25. Critical mineral mission announced in budget 24-25. The mission aims to secure India's critical mineral supply chain by ensuring availability from both domestic and foreign sources. It covers all stages of the mineral value chain, including exploration, mining, beneficiation, processing, recovery from end to live products. The mission focuses only on financial incentives for exploration and does not propose any regulatory changes. The mission focuses only on financial incentives obviously नुहे
रेगुलेटरी चेंजेस को भी अच्छी से 1 and 2 को आप करेक्ट करके चली पारे ए हूँ आंसर ओके सप्लाई चेन बाय द एन्श्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस एंड एक्सप्लोरेशन माइनिंग ये सब मध्य अच्छी सेकेंड स्टेटमेंट रे मखाना इज ऑफन रेफर टू एज द ब्लैक डायमंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई मार्केट वैल्यू एंड डार्क आउटर लेयर आंसर कौन हम मखाना मखाना जो आपनकर मखाना को काफ़ी गुरुत्व दिया जाउची फोकस दिया जाउची बजेट रे ड्यू टू दिस हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन तेणु मखाना को ब्लैक डायमंड बोली कहा जाए प्लस ताको फोकस भी करा जाउची हाई मार्केट वैल्यू एंड डार्क आउटर लेयर पाई सो आंसर होची ऑफ कोर्स ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू regarding the urban cooperative bank देखो urban cooperative banks with deposit above 100 crore are classified as the scheduled urban cooperative banks. Second, scheduled urban cooperative banks are eligible for RBI refinance and membership of clearing houses. Urban cooperative banks are not covered under the Banking Regulation Act. Urban cooperative banks with deposit of 100 crore are classified as the scheduled and urban cooperative banks are eligible for RBI refinance and membership of clearing houses. तमने urban cooperative banks refinancing facility से पाई परिबो कोटा आपनकर RBI through yes मखाना board plus membership of the clearing house जो inter bank checks clearance पाई मध्य ताको मिलिबो facility plus आपण देखिबे ये जो 100 crore classified कारण आपण जो universal bank अछि बैंक लाइसेंसिंग 100 crores मिनिमम कैपिटल दरकार एंड देन सेटा को आपण शेड्यूल्ड सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई रे मेंशन करा जिवो एंड दैट इज अंडर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोली कहा जाए आरबीआई एक्ट 1934 बट एज ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी सेत्रे मध्य कंट्रोल करा जिवो दैट मींस एज ए बैंक इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू कंट्रोल अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज पर 1949 कारण तार सीआरआर अछि एसएलआर अछि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अच्छी ताकू आपण अवॉइड करि परिबे नाही सो सुपरवाइजिंग वर्क इज बीइंग डन थ्रू दिस एक्ट बाय द आरबीआई द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई डिसाइड्स पॉलिसी रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट द एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 members including the 3 from RBI 3 from external members appointed by the government of India the governor of RBI is the chairperson of the MPC and decision of the MPC are binding on the RBI. Decision of the MPC are not binding on the RBI. It's recommendation or advisory nature. तो थर्ड स्टेटमेंट को आपण एलिमिनेट कर दी परिबे बाकी जो दुईटी अछि ताकू आपण ठीक बोली कहि परिबे कारण 6 टी मेंबर अछंती आरबीआई गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन एवं 2 जण डेप्टी गवर्नर भी रहिबे 2 जण डेप्टी गवर्नर भी रहिबे आपनकर सॉरी 2 जण आरबीआई रहिबे अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई गवर्नर जणे डेप्टी गवर्नर आउ जण होचंदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जे कि जण बैंक ऑफिसर आउ आपनकर रहिबे 3 जण फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉमिनीज आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट दे must not be government officials rather they are nominated from different experts like finance economics or any such banking matter okay ठीक अछि आंसर होची ए obviously next which of the following are objectives of the monetary policy committee रा objective कोन देखंतु objectives price stability supporting economic growth ensuring financial inclusion मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो काम होची इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करिबा प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करिबा प्राइस स्टेबिलिटी विथ द इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट द वर्क ऑफ आपनकर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो ओके नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन रो माने कोन रूपी डेप्रिसिएशन होची $1 इक्वल्स टू 70 रुपीस लेट से 75 हेगला 80 हेगला ये सब कौन रूपी डेप्रिसिएशन आसूची सो रूपी डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसीज ये होची आपनकर रूपी डेप्रिसिएशन
decrease in the value of rupee relative to the foreign currencies. So Indian rupee against the dollar. Which of the following factors can lead to rupee depreciation? Kouthipai rupee depreciation habo. First dekhantu, higher import bill than export earning, increase in the foreign capital flow, rise in the crude oil prices. So first dekhantu, rupee depreciation kahinki habo? Now rupee depreciation means if demand for dollar increases, rupee starts declining against the dollar. Tebe କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ demand for dollar ହବ? If higher is the import bill, that means your country is importing more than the export. That means higher is the demand for dollar in your economy with respect to the supply. Increase in the foreign capital inflow. Foreign capital inflow jodi asibo, availability or supply of dollar will increase in your economy. So price of dollar will come down. That means Indian rupee will appreciate, dollar will depreciate. So this statement is something contradicting this. Rise in the crude oil prices in the international market. That means for the same quantity of the crude oil, you have to pay more. That means again you have to acquire the more dollar. You will increase the demand for the more dollar. Rupee will depreciate. So 1 and 3, these two options are correct. So answer is B. 1 and 3, these two options are correct. So 1 and 3. Which of the following are effects of rupee depreciation on the Indian economy? Which of the following are effects of the rupee depreciation on the Indian economy? Rupee depreciation ro impact आपण कहि परिबे. जदि rupee depreciate हुए $1.70, okay, or $1.60, let's say 80 rupees. So 60 thela, 70 hela, 80 hela. That means rupee depreciating. The value of rupee is going down. Imports become costlier. For the same basket of goods, you have to pay more. Import definitely costlier habo. Exports become cheaper and more competitive. Yes, foreigners ko pai apon ko country ro goods gudiko cheaper habo. So your export will increase. Inflationary pressure increase. Obviously, जो गुड़िक इंपोर्ट आपण आगुरु कम पैसा रे करूथिले, you have to pay more for the same basket of goods. That means in your country inflation will be there on your imported products. That means imported inflation बोली ताको आमे कहि परिबा. So ये भी inflation pressure will increase in your economy. So answer is obviously D. Inflation pressure काहेकि देखा जिवो जदि आपण इंपोर्ट करिवे. सपोज रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करूथबे अधिका प्राइस देकी ताको फिनिश प्रोडक्ट रे प्रोड्यूस करिवे ताको अधिका प्राइस रे बिकिबा को पड़िबो आपन को. नेक्स्ट देखिबा, हु हैज बीन अपॉइंटेड as the chairperson of the working group to revise the wholesale price index from 11-12 to 22-23. CPI बर्तमान आमे देखिचे जोटा अछि 23-24 हबार अछि, GDP 23-24 हबार अछि. आई थिंक WPI भी आपनकर सॉरी GDP 22-23 हबार अछि एंड WPI भी आपनकर 22-23 हबार अछि. तबे को कमिटी एटा को रेकमेंड करिछि, ये करिछि आपनकर प्रोफेसर रमेश चांद जे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट वर्किंग इन द नीति आयोग. सी रेकमेंड करिसंती WPI रो बेस ईयर को चेंज करिबा पई 11-12 को चेंज करिकी 22-23 को आनिबा पई, 11-12 को चेंज करिकी 22-23 को आनिबा पई सी ही रेकमेंड करिसंती. ओके, ठीक अच्छी. तापर देखिबा नेक्स्ट, the wholesale price index in India, the wholesale price index in India is released by which of the following organization? wholesale price index को किए मेजर करे, ओके, किए रिलीज करे? wholesale price index, office of the economic advisor, department for promotion of industry and internal trade. office of the economic advisor, department for promotion of industry and internal trade, ये होचंदी आपनकर wholesale price index को रिलीज करते. ओके, which component has the highest weight in the WPI basket? which component
is the highest weight in the WPI basket. Wholesale price index रे कोटा को अधिका प्रायोरिटीज आमे दउचे, अधिका वेट आमे दउचे, अधिका वेटेज आमे दउचे WPI रे. Primary articles, fuel and power, manufactured products and minerals कागु दउचे? Yes, manufactured. अधिका वेटेज आमे कागु दउचे? Manufactured. Okay. Next, fiscal health index is released by which of the following agency? Fiscal health index रे Odisha is the top performer. Odisha is the top performer. ये question अपन को राशि पारे. Fiscal health index को किए release करंदी? It's not fuel and power सोनो. It's manufacturing. मन रखते हुए WPI रे manufacturing. Consumer price index रे होचे अपन करो food and fuel. Consumer price index रे होची food and beverages जोटा में कुछ food and beverages. WPI रे होची manufacturing. ये होची अपन करो कोनो Reserve Bank of India, Ministry of Finance. ये होची अपन करो नीति आयोग. Fiscal health index. Okay, नीति आयोग. Which of the following is the key use of fiscal health index? Fiscal health index रे काम कोण? Guiding state level policy interventions to improve fiscal governance and economic resilience. Guiding state level policy intervention to improve fiscal governance and economic resilience. Okay, ये होची अपन करो आइडिया. फिस्कल हेल्थ को भली भाव रे स्टेट्स गुडी को फिस्कल मैटर रे मैनेज करूछन. एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बर्डन, दैट मीन्स डेप्ट केमती से माने मैनेज करूछन. द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. The household consumption expenditure survey 23-24 was conducted by Niti Aayog, National Sample Survey Organization, Reserve Bank of India and Ministry of Finance. Household consumption expenditure survey is conducted by National Sample Survey Organization. The household consumption expenditure survey is organized by National Sample Survey Organization. Which country received the second highest remittances after India in 2024? Which country received the second highest remittances after India in 2024? किए आपनकर सबुटू second highest कहिजी India सबुटू highest remittances as per the World Bank and China is the second. China is the second. India number 1 रे, China होची second rank रे होची as per the remittances. Next देखिबा. Bank net was recently launched by which ministry? Bank net को ministry द्वारा launch करा जाइछि? Ministry of Finance. यार मेन कामो कोण ना बैंक नेट रो कामो होची जो NPAs गुडी को अछि with the public sector banks से ताको purchase करिवो. Bank net is a platform for selling bank shares to investor, one stop e-auction for bank assets, listing new PSB branches, conducting RBI repo auction. ये होची आपनकर one stop e-auction for bank assets. So खास करके जो non performing assets गुडी को अछि ताकू से e-auction करूची. Asset माने कोण जो लोन दिया जाय छै and non performing means that is not recovering. Okay, से लोन फेरी आसु माने recover हेई पारु नाही. So NPAs have been e-auctioned with respect to the bank net. Public sector banks गुडिकर जो non performing assets अछि ताकू e-auction करा जाउछि. Leads 2024 is released by which of the following ministry? Road Transport, Highways, Commerce and Industry, Shipping, Ports, Waterways, Ministry of Finance. Answer होछि आपनकर Commerce and Industry. Leads होछि आपनकर with respect to the in transportation केते easily transport हेई पारुछि. Transportation and transportation facilities with respect to or among the states. Leads index होछि transportation या logistic जोटा आपण कहि परिबे. Primary objective of the leads कोन ना to provide insights into improvement of the logistic performance of the states and UT level. Logistic performance of the state and UT level एटो आमे कोन कहूचे leads बोली कहूचे. Leads बोली कहूचे. Which one of the following links all the ATMs in India? कि को एजेंसी एमान को भितरे जे सबु ATM को लिंक करूची. That means आपण जे कोनोसी बैंक रो ATM यूज करी कि जे कोनोसी गोटे बैंक रो ATM रु आपण विथड्रॉ करि परिबे मनी.
दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जे आपनकर यूपीआई को मध्य डेवलप करिछि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जे आपनकर यूपीआई को मध्य डेवलप करिछि सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर लॉन्च्ड इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो and cash reserve ratio of the commercial bank. Both SLR and CRR have been raised. Economic reform को आज होची ना. Okay, SLR has been reduced, cut, but CRR has been raised. SLR has been increased, CRR has been reduced. SLR and CRR have been reduced. जेतबेले इकोनॉमिक रिफॉर्म हेतिला आपन को देखिबे 1991 पर कमर्शियल बैंक्स केस रे SLR एवं CRR रो क्वांटिटी को कम करा जायतिला SLR एवं CRR रो क्वांटिटी को कम करा जायतिला so that more liquidity with the banks and there will be more credit creation, more money supply in the economy, and that lead to what? That lead to increased economic activities. Okay, that leads to increased economic activities. ठीक अछि. So हमरो फाउंडेशन बैच जो माने जॉइन करिबा पई चाहूचंदी प्लैटिनम 4 इयर्स रो वैलिडिटी सहित 15,999 गोल्ड 8,999 रे भी परचेस करि परिबे. ओके एंड मु आपन को कहि रखे जो माने हमरो फाउंडेशन बैच परिपूर्णा भी जॉइन करिबा को चाहूचंदी जॉइन करि परिबे. एटा होची 24 मास रो वैलिडिटी इंग्लिश ओडिया रे आपन को कवर करा जिवो. ओवरव्यू देखिनंतु 16 अक्टोबर रो बैच स्टार्ट होची 1200 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर रहिबो. क्रक्स आपन को अवेलेबल इन इंग्लिश 1-to-1 मेंटरशिप handwritten notes for quick revision special focus on ओडिशा specific topics जदियो एठी स्टार्ट होउची 16 तारिख रु बट आपण 30 तारिख पर्यंत हमरो वैलिडिटी अछि डिस्काउंट रो जो माने चाहिबे डिस्काउंट नै परिबे. ओके लेट मी शो यू द प्राइस एज वेल बाय नो करिके एठी नंबर एंट्री करिवे कंटिन्यू करिवे ओटीपी आपण को फोन को आसीबो ओटीपी एंट्री करिवे ओटीपी एंट्री कला पर पुणी थे आप बाय नाउ करेंगे बाय नाउ कला पर किसी भाव में आसो ये एंट्री करेंगे JN लाइफ मोर कोड टी ताको अप्लाई करेंगे अप्लाई कला पर आपको देखो 8,999 रे मिले याठू सस्ता आपन को आउ मिलिबो नाही याठू सस्ता आउ मिलिबो नाही तेणु 8,999 रे आपन को प्राइस रे मिलुची ये बैच टी तेणु 24 मास रो वैलिडिटी सहित ये बैच को आपण परचेज करि परिबे परिपूर्ण रे एठी आपण चाहिले इंग्लिश लैंग्वेज मध्य ऑप्ट करि परिबे बट किछि दरकार नाही जेतु एटा इंग्लिश एंड ओडिया रे अछि तेणु आपण इजीली 8,999 रे द लोएस्ट प्राइस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी IQ. ओके कोड यूज करिबे JN लाइफ टू मैक्सिमम डिस्काउंट. बाकी म आपण को कहिछि कोन कोन फैसिलिटी मिलिबो क्लासेस अछि नोट्स अछि. ओके क्लासेस अछि नोट्स अछि आपनकर देखि परिबे एठी सबु जिंस मेंशन अछि. डेमो लेक्चर भी जाइकी तळु आपण देखि परिबे फैकल्टीज मानकु त देखि परिबे डेमो लेक्चर भी देखि परिबे. कोड मन रखथिबे JN लाइफ. ओके कोड कोन रखिबे JN लाइफ. ठीक अछि बाकी एटा को स्कैन करके आपण जॉइन करि परिबे PDF फाइ स्कैन करिवे जॉइन करिवे PDF पाई किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन आज थिला मो डिस्कस कली एवं सिलेक्टेड एथि पाई कि जति कि आपनकर सिलेबस प्रीलिम्स अनुसार ताको मु कवर करिछि एवं अलोंग विथ द करंट अफेयर्स काली मध्ये गोटे सेशन रहिबो आपण चैनल रे देखि परिबे काली अराउंड 2:30 3 o'clock रे गोटे लॉन्ग सेशन पुनी रखिबो लास्ट संडे टाइप रो. ठीक अछि थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून. थैंक यू PDF पाई जॉइन करि परिबे एटा. थैंक यू. आज या पर जहाँ यूट्यूब रे देखिए जदि किसी सेशन थिबो पेड बैच तो अच्छी एबे 6टा बेले एबे जो 6टा बेले पेड बैच तो अच्छी. थैंक यू.